हेलो एवरीवन, वेलकम टू चार्ट ऑफ द डे। माई सेल्फ राही मासूम रजा फ्रॉम ट्रेडर स्मिथ इंडिया। और आज के चार्ट ऑफ द डे के लिए आई हैव सेलेक्टेड टू स्टॉक्स। वन इज IFB इंडस्ट्री एंड द सेकंड वन इज रैलिस इंडिया। So let's see how these two stocks are appearing on the chart and what their price action actually suggests. सो दिस इज द डेली चार्ट ऑफ IFB इंडस्ट्री। और IFB इंडस्ट्रीज में अगर यहाँ देखें तो 7 अगस्त जो इसने हाई बनाया था वहाँ पर इट वाज अराउंड 2172 रुपीज़ का। और वहाँ से द स्टॉक हैज एक्चुअली वेंट अंडर द करेक्शन फेस। एक ऑलमोस्ट 1.5 मंथ का करेक्शन हुआ। एंड और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो हरा वाला लाइन है दैट इज 100 DMA। वहाँ पर स्टॉक हैज गॉट द सपोर्ट एंड फ्रॉम दैट लेवल ऑफ 100 DMA द स्टॉक हैज tried to move upside and buying interest has also emerged here। और उसके बाद एक स्टॉक में एक बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होने के बाद ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। और आज के ट्रेडिंग सेशन में द स्टॉक हैज एक्चुअली हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट एंड ऑल्सो इट हैज 15 around 15 to 16% of gain on intraday, and it has formed a bullish candle with higher high and higher low price structure on the daily chart, and also it has reclaimed its 50 DMA with above average volume जो यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका EPS स्ट्रेंथ का बात करें तो इट इज हैविंग EPS स्ट्रेंथ ऑफ 65 which is actually fair, and it has a buyer demand of A- which is great। If we'll talk about number of funds, so it has increased to around 4.40 in the last quarter. So the next stock is Rallis India. So Rallis India, maybe there was some profit booking after hitting its recent high in the range of we can say on 6th of August when the stock has got high. The recent high I'm talking about, which is 373 rupees। एंड वहाँ के बाद एक थोड़ा सा एक इसमें कंसोलिडेशन देखने को मिला। बट यहाँ पे जो 100 DMA का जो हरा वाला लाइन उसी का आसपास में इट वाज होवरिंग अराउंड दैट रेंज। और वहाँ से किसको बाइंग इंटरेस्ट दोबारा एक इमर्ज हुआ वहाँ, और वहाँ पे थोड़ा स्टॉक हैज़ गॉट एक्यूमुलेशन एज वेल। एंड आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक हैज़ एक्चुअली आज थोड़ा गैप अप खुला है। और उसके बाद ये स्टॉक हैज़ रिक्लेम्ड इट्स 50 DMA विथ अबव एवरेज वॉल्यूम। और इसका एक और रीज़न ये भी है कि दिस कंपनी हैज़ ऑल्सो पोस्टेड ए रॉबस्ट फिगर इन टर्म्स ऑफ Q2 वेयर द प्रॉफिट हैज़ रोज टू 20%, and its revenue has also increased to 11.5% to rupees 928 crore in comparison to 832 crore in the same quarter last fiscal year. So that was also the impact, stock has reacted in a positive manner। and आज के ट्रेडिंग सेशन में the stock has gained around 12%, we can see it here। और जहाँ तक बात करें इसके बैड डिमांड की, बैड डिमांड इज B+। और नंबर ऑफ fund holdings in the last quarter there has been slight decrease in that which is 1.15% negative। सो ये है हम लोग आज का चार्ट ऑफ द डे। सो लेट्स सी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे विथ अनदर स्टॉक्स एंड अनदर चार्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो।